So whenever you think of endowment numerical, don't think of endowment numerical as a new concept. क्योंकि अगर आप न्यू कॉन्सेप्ट करना शुरू करोगे ना, तो आपका जो सिलेबस है इस पूरे सब्जेक्ट का, वो बहुत ही वास्ट है. एंड यूनिट 2 इज इवन ट्रिकियर. एंड इट्स अभी जो हम बाकी चैप्टर्स करेंगे, इंटरटेम्पोरल एंड अनसर्टनिटी. इंटरटेम्पोरल तो फिर भी सिंपल है, बट अनसर्टनिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी ट्रिकी. So then what happens is it becomes really overwhelming. One, two, you get easily confused क्योंकि आप इतना टाइम दे के हर एक चीज को उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो जितना आपको करना चाहिए. इसीलिए जस्ट टू मेक इट इजियर, आई वुड से व्हेन यू थिंक ऑफ एंडाउमेंट न्यूमेरिकल, जब आपको एंडाउमेंट न्यूमेरिकल लगता है आपको करना है, यू थिंक ऑफ इट एज स्लट्सकी. क्योंकि एंडाउमेंट जो है उसके अंदर हम स्लट्सकी ही करते हैं, प्लस वी एड अ स्टेप. सो एक्चुअली हम जब ये वाली न्यूमेरिकल वीडियो करेंगे, ये वाली चीज आपको ऑलरेडी आनी चाहिए क्योंकि आप ये ऑलरेडी पहले चैप्टर्स में कर चुके हो. आपको सीखना क्या है इस वीडियो से? ये दिस स्टेप यू हैव टू सी, बट दिस वन इज समथिंग दैट यू शुड ऑलरेडी नो. So before I start with the numerical, I want to point out one thing, one simple thing जो हम पहले भी कर चुके हैं. अगर आपका E नॉट जो है वो एंडाउमेंट के राइट पे है, if my E naught is towards the right of my endowment, I'm talking about good one here, huh? तो इसका मतलब आप कंज्यूम ज्यादा करना चाहते हो एज कंपेयर टू जो आपने प्रोड्यूस किया, देन यू आर अ नेट बायर. और अगर आपका एंडाउमेंट जो है वो E नॉट से राइट में है, दैट मीन्स इफ E नॉट इज टू द लेफ्ट ऑफ एंडाउमेंट, देन यू आर अ नेट सेलर. तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, लर्न नहीं करनी है, समझ में आनी चाहिए. लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन. U is equal to XY. ठीक है. We are given the endowment to be, the endowment is given to be, let's say 5, 10. Initial prices are 10, 10. So this is my endowment. This is my initial prices. My new prices are, let's say 5, 10. ठीक है. सो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड एंडाउमेंट इनकम इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड एंडाउमेंट इनकम इफेक्ट. स्लट्स की करा हुआ है अच्छे से, तो ये और ये निकालना आता है. यही एक नई चीज है ना, ये और ये निकालना तो आता है. ये दिस इज ओनली द न्यू थिंग. सो दिस इज द एडिशनल स्टेप दैट यू टॉकिंग अबाउट. बट यहाँ तक जो मैं क्वेश्चन करूंगी वो आपको आना चाहिए. मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट क्वाइटली गोइंग टू सॉल्व इट. And you can just keep cross checking it. U is equal to XY subject to, ये जो E नॉट है ये AB पे है. AB पे है मतलब ओल्ड प्राइस है, ओल्ड इनकम है. तो सबसे पहले तो मैं ओल्ड इनकम निकाल लूँ ना. ओल्ड इनकम इज हाउ मच? 10 into 5 50 plus 10 into 10 100, which is 150. My original income is 150. So subject to 10x plus 10y is equal to 150. Cobb है तो equilibrium condition is tangency. Y by x is equal to P1 by P2, which implies y is equal to x. That means x is equal to y is equal to, my consumption bundle is 7.5, 7.5. ये है E नॉट. अब निकालते हैं E नॉट डैश. E नॉट डैश निकालने के लिए M डैश निकालना पड़ता है. M डैश is new prices and E नॉट bundle. So 5 into 7.5 plus 10 into 7.5. So this is 75. This is 37.5. This comes out to be 0.5, 7, 5, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 112.5. So E naught dash में हम क्या करेंगे? Again y by x is equal to 5 by 10, which is that 2y is equal to x. This 2y equal to x, हमारे पास budget line क्या है? 5x plus 10y is equal to 112.5. So x की जगह I can write 2y. So again I get 10y. 10y plus 10y is 20y. So y is equal to 112.5 upon 20. And then automatically x is 112.5 upon 10, which is 11. This is 11.25. This point is 11.25. And this point is what? This point is 5.6. X is 11.25.
and Y is 5.625. E naught dash is 11.25, 5.625. ठीक है, कुछ नई चीज नहीं करी अभी तक मैंने. आई एम जस्ट फॉलोइंग द सेम स्टेप्स एज अर्लियर. कोई भी नई चीज नहीं करी है. अब हम निकालेंगे E1. E1 भी आपको निकालना आता है. E1 is again y by x is equal to the price ratio 5/10. हमारी बजट लाइन क्या है? 5x plus 10y is equal to the original income, and the original income we know here is 150, right? So equals to 150. So I'm not doing anything new here. By the way, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है हमने सिर्फ सत्सकी को ध्यान में रख के किया है. So y is equal to 150 upon 20, which is nothing but 7.5, and x is double that, which is 15. So my bundle here becomes 15, 7.5. So substitution effect हमारे पास आ गया E naught dash minus E naught. Income effect हमारे पास आ गया E1 minus E naught dash, है ना? So I have the point E naught, I have the point E naught dash, I have the point E1. Anything new so far? No. Now we do the new thing, which is E2. Now we do the new thing, which is E2. E2 is what? E2 is the step that we are adding. ठीक है, हमारे पास M है. अब हमें निकालनी है न्यू इनकम, which is M1. M1 is nothing but P1 into endowment plus P2 into omega 2. 25, 100, the new income is 125. So now E2 is U is equal to XY subject to 5X plus 10Y is equal to 125. ये जो 125 है, I want to just say one thing. This is new income. This is compensated income. ये आपको दोनों इनकम में कंफ्यूज नहीं होना है. ये इनकम आप स्लत्सकी में भी कैलकुलेट करते थे. ये इनकम स्लत्सकी के चैप्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. ये इनकम कैसे आई? न्यू प्राइसेस को एंडाउमेंट से मल्टीप्लाई करके. ये कॉम्पेंसेटेड इनकम हम कैसे निकालते हैं? व्हेन वी मेक ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल. और वो चीज हम क्यों करते हैं? व्हाई डू वी मेक ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल? क्योंकि स्लत्सकी ने बोला था सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट को सेपरेट करने के लिए हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी सीधी, जो कि पैरेलल होगी नई बजट लाइन के, एंड इट हैज टू मेक ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल. सो माइंड यू, M dash and M1 are two different things. I am using M1 now, which we hadn't used earlier. So अगर आपको इसमें confusion हुई तो मतलब आपको पिछला वाला चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा. ये अगर ठीक से आ गया है, then this is very simple. It's just adding a step. मैंने M1 कैलकुलेट किया, मेरे पास यहाँ पे है, I can just calculate it. Y by x is equal to 5/10, which means 2y is equal to x. So I have 10y plus 10y is equal to 125, which implies y is equal to 6.25 and x is double of that, which means it is 12.5. So my new bundle is 12.5, 6.25. So what is my endowment income effect, the new thing? It is E2, which is this, minus E1. E2 minus E1. Alright, so that is the thing. Now, how to plot it? See, diagram मैंने last video में किया था. I just want to take a moment and explain that one more time. So, how do we? So, हमें स्लत्सकी ड्रॉ करना आता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी करा था. ये स्टेप ही तो ड्रॉ करना है ना. इसके लिए अब क्या है? What is the difference here as compared to earlier? मुझे पता है कि इनिशियली जो पर्सन है वो नेट बायर है कि सेलर है. तो मुझे जो एंडाउमेंट का पॉइंट मार्क करना है ना डायग्राम में, वो केयरफुली करना है. बाकी तो डायग्राम सेम ही है. So मेरे पास इनिशियल एंडाउमेंट इज 5, 10. माई इनिशियल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इज 7.5, 7.5. तो मैं गुड 1 के परस्पेक्टिव से अगर देखूं तो मेरे पास एंडाउमेंट है 5 और मेरी कंजम्पशन है 7.5, which means I'm a net buyer. I'm a net buyer, right? So when I draw the diagram, I know these are the two possible cases. This is E naught and this is endowment. This is E naught and this is endowment. Which is the case of net buyer? Which is the case of net seller? Here, your endowment is more than your consumption. So this is a case of net seller.
एंड हियर एंडाउमेंट जो है वो कम है और कंजम्पशन ज्यादा है. सो दिस इज द केस ऑफ नेट बायर. हमारे को कौन सा केस दिखाना है? हमारे को इसके अंदर जो हमने ये केस लिया है वो कौन सा केस दिखाना है? नेट बायर का. विच इज वाई वी हैव दिस एज द करेक्ट केस. स्लत्सकी बनाना आता है, एंडाउमेंट को कहाँ मार्क करोगे? टू द लेफ्ट, क्योंकि आपको कौन सा केस दिखाना है? नेट बायर का. And that's it. That's your answer. That's your Cobb Douglas and the numerical and the diagram for endowment. In the next few videos, I'm going to cover perfect substitutes, perfect complements, and quasi-linear also for endowment. But believe me, analysis में कोई फर्क नहीं है. Slutsky आता है ना, तो उसके बाद तो एक step ही add करना है. The reason I'm doing these numerical videos is so that you can actually practice with me and you're done with it. तो अगर आप वीडियोस अच्छे से करते हो, सारे क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, असाइनमेंट साथ साथ कर रहे हो, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. दैट्स द ओनली एंड ओनली रीजन आई एम गोइंग टू बी डूइंग द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस. अदरवाइज इफ यू थिंकिंग दैट देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू मेथड इन एनी ऑफ देम, इट्स नॉट सो. इट इज द सेम मेथड. स्लत्सकी हमने कर लिया है सभी फंक्शंस का. इट इज जस्ट अबाउट एडिंग अ स्टेप. एंड हाउ डू यू एड अ स्टेप? आप कैलकुलेट करते हो m1 और फिर अपना utility function maximize करते हो subject to the new prices, new income, budget line, and that's it. That's all what it is all about. All right. So I will see you in the next video. Thank you.